Right. I think we're live and yes. So hi guys, what's up? We're back with another AMA session. Today we have Rishabh with us. Rishabh is again, like I said, he's a new addition to the Peak Mind Compete community, and he will be with us, working with us for the next 2 months, and he'll also, be present for, uh, spontaneous AMAs because, uh, I mean, he's working, but then he's also had gone through that whole journey. He's been through, his own JE, and he has graduated from IIT Kanpur, and he will be working as a in one of the best consulting companies, which is Bain. So, hi Rishabh, welcome to AMA, and Hi, thank so you. so just a very like a casual start to the discussion. How was your preparation like, and what was it when you were finally giving your exams? तब मतलब वो जो लास्ट एक 2 महीने 1 महीने का जो एक स्ट्रेस होता है, how did you cope up with that? What did you do extra? And how was that? Well, to be honest, I think the stress as the deadline approaches becomes more and more. Like that's pretty obvious because there's a lot of stuff that keeps piling on, and you have to kind of manage it all. Plus, there's the future stuff that you might have not, yet studied about. But when the actual exam like it's like 1 month, there's only 1 month gap. There you become super focused like that. It's a kill or be kill situation then. So I think that kind of ups your adrenaline to a level that you just put on the efforts continuously. And definitely your efforts at that point of time will be way more than let's say an year ago, so you don't have to worry that much about it. uh, let's say 1 year into the preparation, you have more leeway into, kind of playing around with the plans, playing around with how you're going to prep. But during that time, you need to be super focused on what are your shortcomings, what are your strengths, and then accordingly you have to work on them when that, the last month. So if you're starting off, I would say have a lot of tests because that's one metric that will give you where you're lacking. And if it's like you're just going to give your exam very soon, then I would say don't think about what's the right way or the wrong way. It's more like just doing. The doing part is what will, move you ahead. The thinking right now is not that important. The planning part kind of is not as important. Trust what you have done over the past 2 years. Right. I think that is a great advice. And I'll also extend this question to Prerak. Prerak, if so, Rishabh, I think I haven't introduced you to Prerak. Prerak is from AIMS Bhopal and he's in his final year right now. And Prerak actually had a All India rank of 33 in NEET 2018. So Prerak is quite the sort of, you know, uh, like the topper we see in our coaching centers and in the newspapers. So yeah, प्रेरक तुम्हें क्या लगता है लास्ट में वो जो 1 महीने 2 महीने में होता है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम जो भी प्रेप हमने अभी तक करा होता है, एंड उसमें क्या क्या करना चाहिए? इट्स लाइक जो लास्ट का हमारा प्रिपरेशन रहता है, लास्ट का जो हमारा प्रिपरेशन रहता है ना, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग नाउ। ओके, इट्स लाइक हमने अपने 2-3 साल जितना भी पढ़ा है उसमें वी ट्राई टू गिव अवर 100%, एंड इवन मैं तो अपना 110-120% देने का ट्राई करता था। तब हमारा लर्निंग वाला फेज था। अब लास्ट का 1 मंथ होता है, उसको हल्का हल्का रिवाइज करना और रिटेन करना। इट्स लाइक मैं ये सोचता हूँ कि 110%, 120% अगर हम देंगे तब रिटेन करके किसी तरह 100 तक बचेगा हमारा। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अब हमें मॉक टेस्ट देने होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन में, एंड वी हैव टू रिवाइज अकॉर्डिंगली। जैसा भी हमारा परफॉर्मेंस आ रहा होता है, जैसा भी हमें लगता है थोड़ा थोड़ा वीक रह गया पार्ट, उसको रिवाइज करना होता है। लर्निंग पार्ट एकदम खत्म हो जाता है, एंड दैट्स इट। आई थिंक यही सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है कि जो हमने पढ़ा है 2 साल, उसको हम बचा के कैसे रखें। बहुत जल्दी मतलब वेपराइज हो रहा होता है, उसको रोकना पड़ता है अपने को।
राइट, और टेस्ट के लिए व्हाट अप्रोच डू यू सजेस्ट? इस टाइम पे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू बी वेरी या जैसे अभी इस मंथ में जेई मेंस है एंड अगले मंथ में नीट है, तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट फॉर मेंस एंड नीट बोथ, आई थिंक you can give a mock test every second or third day, whatever is comfortable. We can start giving it every 3 days, like 2.5 days we will prepare. Then 3 hours we will give the exam, and then we will analyze the part, and that's it. Then we can shift it to like 2 days per mock, and after that we can give daily. So for first 12 days, I recommend we should give on every third day. Then for next 10 days we can do it on every second day, and after that we are going to solve daily. And रोज के रोज पेपर दे के रोज रोज एनालिसिस करना होता है। फिर हमें देखना होता है जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वर द मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे थे भी कि मतलब वो गलत होने चाहिए कि नहीं, बिकॉज कई कई बार होता है कुछ टॉपिक से मतलब ऐसे ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड उतना वापस से रिवाइज करके रिक्वायर करने की नीड नहीं होती। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए ऐसे खास रिवीजन करने की नीड नहीं होती है। और जहाँ पे हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनका रिवीजन में करना चाहिए। एंड ऑल्सो मतलब हम लोग खुद ही जान जाते हैं हमारी वीक पॉइंट्स कौन से हैं। जैसे मतलब मुझे पता था कि मेरे बायोलॉजी में कुछ कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनको मैं कितनी बार भी पढ़ लूं मुझे याद नहीं रहता है, तो उनको मैं हर मॉक टेस्ट के पहले एक बार रिवाइज करता था, ताकि एंड में मुझे वो याद रह जाए। एंड इन ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही कुछ टेबल्स वगैरह बना रखे थे जिनको हर टेस्ट के पहले देखना ही पड़ता था। राइट। तो द पॉइंट इज, अभी इस टाइम पे नया इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तो कोई लॉजिक नहीं है। सो यू व्हाट यू डू इज नहीं नहीं, बेसिकली, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। और अपने आप पे लोड कम करते जाओ, जितना लोड कम करोगे और जितना कॉन्फिडेंस गेन करोगे उतना ज्यादा अच्छा काम आएगा। राइट, तो तुम्हें तो बेसिकली व्हाट आई सजेस्ट, एंड आई थिंक इज यू शुड प्लान अहेड ऑफ 6 मंथ्स कि तुम एक ऐसा अपना सोर्स रिसोर्स का एक स्टैक बना लो जहाँ से तुम लास्ट के 2 महीने 3 महीने पढ़ सको। तो शॉर्ट नोट्स, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क करके, ऑल ऑफ दैट, एंड यू व्हेन यू accumulate दैट, एंड के 2 महीने में जस्ट मेक श्योर कि तुम उसके थ्रू जस्ट बिलीव करो, एंड फटाफट उसे उसे कवर कर लो। बिकॉज दैट इज़ वॉट if you're studying a new chapter, या if you're thinking कि उस टाइम पे तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कुछ नया पोर्शन उठाओगे, then that will be impossible, right? Because तुम्हारे पास एक तो स्ट्रेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, that you have to suddenly study a completely new thing. So I always suggest कि if you even do 40% or 50% of the syllabus, तो डोंट फोकस ऑन गोइंग टू 100%। तो मतलब अगर you can aim for 60% and then just practice the questions, and that is, I think, actually giving an exam smartly, right? And only smart test takers actually get through very well. I've seen very डेडिकेटेड एंड पैशनेट स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ते रहते थे एंड जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते थे, बट देन दे एंडेड अप not having the best results, because of the fact कि they weren't smart enough in their preparation. They weren't smart enough to strategize how to optimize their marks, और वो बहुत common होता है। तो that is why we say that it is not very important to be naturally very talented or gifted, or you know uh, very intelligent. It is important to be smart, and smartness is something that you can acquire, that you can practice. And yeah, so another question which is very common and which we always get is कि end में you don't feel very confident in a lot of topics, ऐसा होता है, a lot of portions. Let's say if you're studying chemistry, so you won't feel very confident in, let's say, organic chemistry. And in that sort of a situation, then you feel like कि should I do this अभी इस time पे, should I revise more, or should I just spend my time in actually studying everything else, मतलब बाकी physical और inorganic कर ले. So I would like to ask Rishabh, what would be your take on that? कि peak preparation time जब तुम्हारा you're giving tests and everything.
Should you do topics that you're not very confident in and try to score well, or should you practice the topics which you're confident in? What do you think should be the approach? I think you should, like you said, we have to plan it accordingly. For the topics that you're pretty sure that you're confident in, you need to have a set of questions defined before that. If I do these questions, I will be testing all the concepts that are going to be used in these following questions. Right, in these following topics, I will be able to revise everything just by doing these set of questions. For the topics that you're not that confident in, I would say you have to take a binary approach. One, you have to practice, and as you practice, if you do not know something, then you have to revise as well. Because the tests, the exams are not like you cannot expect that question will only come from one topic. They're going to be very well distributed. So having the freedom to revise those topics that you're not confident in, while having some revision time allocated for those that you're confident in, because you do not want to lose out at least on those marks, is very important. Right. uh, Prerak, what is your take also? I would like to know. Prerak, I think you're mute. And also your voice is not coming. So Prerak, I think I would also like to know what your views on this. I'm sorry, I was also mute. So, I think Prerak is answering. उस तब तक, I can also take a, jab at this question. And I think this is very common because, confidence is very relative. तो ऐसा नहीं है that only you are feeling this. I think the people that like the so-called toppers, or so Prerak खुद यहाँ पे बैठे ये under 50 rankers in these exams, I think they also feel the same sort of a fear for some topics, yeah, low confidence for some topics and very high confidence for the others. So it is very relative, right? So your you would know actually कि तुम कितने prepared हो. ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब low confidence मतलब you won't be able to attempt the question. So again, you have to be smart in studying those topics, right? If you're studying them from the first principle and then you're picking up the concepts, that is a stupid thing to do. What you should do is basically you should make cheat sheets, you should make notes of the formulas and important concepts, and then solve questions which are very relevant जो पेपर में आते हैं, right? And so let's say if you're taking organic, someone asked me organic last के महीने में कैसे करना है, and यहाँ पे if you start with GOC and if you start solving the mechanisms, I think it is very stupid because फिर तुम एक महीने में शायद सिर्फ अल्काइल हाइड्राइड्स तक पहुँचोगे और वैसे का वैसा 70% पोर्शन रह जाएगा. So what you should do is you should study the 50 most important mechanisms, right? Take 5-7 days to study all the mechanisms. Understand कि कैसे कैसे अलग अलग mechanisms काम करते हैं. I think 50 mechanism होंगी भी नहीं, बहुत important 15 या 20 होंगी which जिससे almost सारे question solve हो जाते हैं. So 15 या 20 mechanism पढ़ो and try to understand, get the hang of it. Now, while you're reading these mechanisms, also look at past year questions and see किस mechanism से ज़्यादा importance दिया है, कौन से कैसे type के questions पूछते हैं. Do they ask direct products? Do they ask the mechanism? Do they ask what sort of a intermediate is formed? Try to figure out all those. Then once you're done with that in like one or maximum 2 weeks, after that start reading theory from any standard textbook, and not like all of theory, but just skim करो कि ये important reactions है. Write it down in a paper, and I think 1 or 2 weeks is enough for that. So again, I would say cover 50 to 60% because like I said, organic is an important portion throughout chemistry, and it is quite heavy in advanced and mains as well. So read through that and try to
ऑप्टिमाइज द टाइम यू आर पुटिंग इन इट। ऐसा तो है नहीं कि तुम एक महीने में सिर्फ वही पढ़ोगे। सो द पॉइंट इज ट्राई टू बी स्मार्ट विद इट एंड नॉट जस्ट डू इट जैसे तुम हर चीज़ कर रहे हो। तो अप्रोच हर चीज़ में यू हैव टू री स्ट्रेटजाइज एंड प्रायोरिटाइज की what is the best for you। And so so what I'm saying is it is important to also do things that you're not confident in, but then जिसमें confident हो उसके लिए you should uh, practice, like you should be in touch, like ऋषभ said कि उसमें touch में रहना बहुत important है, because eventually that will be the topics which you will attempt first in the paper, मतलब those will be the confidence boosters, those will be the topics which will actually allow you to perform the rest of the paper well। you know, there are always these topics, there are always these questions that you see। I remember JEE advanced बैठते ही I saw electromagnetism के questions and I was like कि अगर electromagnetism आया है तो फिर तो बाकी physics भी कर लूँगा, because that is just because I was strong in electromagnetism, तो मुझे वो लगा, है ना। So it is sort of that। Prerak, uh, I think now you should go for this question. Hi guys, we just saw that you guys also joined. If you have any questions, so we are answering general questions that we have had in the past few days that we got. If you have any questions, you can write them down on the general chat section or even the AMA discussion channel, and we will take them up and we will answer it live right now. Yes, but then we face some topics like even if we are topper now, we know that there are some topics where we are not that good. वी मस्ट मतलब हमें उस फियर से ओवरकम करना ही पड़ता है। लाइक मेरे साथ क्या था, ऑर्गेनिक मेरी अच्छी हो गई थी, काफी अच्छी हो गई थी, बट एंड में क्या हुआ था, मेरे टीचर का ट्रांसफर हो गया था जिनसे मैं 3 साल पढ़ा था, Hmm. एंड एक दूसरे टीचर आ गए। तो इट वाज लाइक मैंने तो मतलब मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था ऑर्गेनिक के साथ, बहुत ही ज्यादा। Hmm. बट वो आए और उन्होंने थोड़ा मतलब चीजें मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस रॉन्ग रहते हैं पैकेजेस में या फिर पेपर्स में, बट वो हल्का हल्का रॉन्ग रहते थे, हल्के हल्के नहीं रहते थे, लेकिन वो मतलब ऐसा रहता था जब वो पहले के टीचर्स रहते थे तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते थे, हाँ मतलब हम लोग कितनी बनती थी क्वेश्चन रॉन्ग है, हम लोग पहचान जाते थे। बट सेम थिंग ना दूसरे टीचर के साथ नहीं बनती थी। वो काफी हद तक पीछे पड़े रहते थे कि मैं रॉन्ग हूँ, एंड 90% ऑफ टाइम मैं सही हो जाता था, 10% में रॉन्ग हो जाता था। Hmm. बट और साथ साथ बोलते थे कि ऐसे क्वेश्चन मतलब पैकेज में भी है, इधर भी है, उधर भी है, सो उधर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था मेरा ऑर्गेनिक में। एंड इवेंचुअली जब पेपर था तो मतलब दिन अच्छा नहीं था, इट वाज कि बहुत ज्यादा कोल्ड था, मुझे काफी ज्यादा चीजें थी, एंड तब मैंने वो पेपर दिया था। एंड उस टाइम मतलब पेपर था ना ऑर्गेनिक के, हर क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन फंस रहे थे उसमें मेरी दो अप्रोचेस बन रही थी, एक मेरी ओरिजिनल बन रही थी और एक मेरी जो अभी नई नई बनी है अप्रोचेस वो बन रही थी। एंड Hmm. उन्हीं कंफ्यूजन में मेरे काफी क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। आई थिंक ऑर्गेनिक में तो मेरे 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए होंगे, एंड दोज 5 क्वेश्चंस एक्चुअली कॉस्टेड मी माई AIR 1। तो बात यही होती है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं उनको आपको लेके चलना होता है, एंड किसी भी टॉपिक में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना पड़ता चाहिए। अगर इवन इफ अगर आपको लगता है आपके परफेक्ट नहीं कॉन्सेप्ट, तब भी आपको उनके साथ एडजस्ट करना होगा एंड उनके लिए लो नहीं फील करना पड़ेगा। लाइक मैं उनके लिए लो फील किया एंड फिर सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे आ गए कि पीछे रह गया थोड़ा सा। एंड वही बात होती है कि बायो में मैं ज्यादा कभी कॉन्फिडेंट रहा नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारी चीजें इधर उधर से आती रहती हैं एंड मुझसे इतना याद ही नहीं होता है। बट उनके लिए मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ मैं लास्ट के 2 ढाई महीने सिर्फ एनसीईआरटी देखूंगा एंड मोस्टली उसी से आते हैं क्वेश्चंस, मैं कर लूंगा, बाकी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सॉल्व कर लूंगा, इधर उधर क्वेश्चन आएंगे। तो बायो वॉज माई वीक पार्ट, एंड मुझे नहीं लगता मैंने बायो में कभी भी 330 भी टच किया अपने यहाँ टेस्ट में। एंड एवरेज मेरा 300 के आस ही पास रहता था बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में इट वाज लाइक 330 340 आ जाता था। बट फाइनल एग्जाम में क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था उस चीज के लिए, तो मेरा 350 स्कोर आ गया। तो दैट्स द थिंग, अगर इवन इफ यू थिंक यू आर वीक इन एनी टॉपिक, देन डोंट कंसीडर इट एज योर वीकनेस, वर्क ऑन इट एंड कॉन्फिडेंस हाई रखो, अच्छा होता है।
एंड इवन इफ यू आर वेरी गुड इन एनी टॉपिक, लाइक ऑर्गेनिक में मैंने सोलोमन फ्राइल का इंटरनेशनल एडिशन भी पढ़ा था, MS चौहान भी पढ़ी थी, सब पढ़ रखा था ऑलमोस्ट मैंने, टिल थिंग्स डिडंट गो दैट वेल। एंड एंड में एनसीईआरटी से पॉलिश करनी चाहिए चीजें, जैसे मैंने मेंस में 2 क्वेश्चंस राउंड किए थे ऑर्गेनिक के, तो दे वर आल्सो लाइक दे वर डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। तो करना चाहिए चीजें, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए। एंड आई डोंट नो उस टाइम क्या हो गया था मुझे, एंड आई थिंक ऐसा तुम लोग नहीं करो, ऐसा मैं बिल्कुल चाहूंगा। ठीक है। राइट, राइट। तो या सो हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एंड तो एक क्वेश्चन जो कि उनके लिए है हु आर गिविंग द पेपर नेक्स्ट ईयर, यू नो, एंड दे से कि मतलब हम हमारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा होता है, राइट? एंड बैकलॉग कवर करना, लाइक वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बैकलॉग्स की बैकलॉग कैसे कवर करना है, हम नॉर्मल अप्रोच बताते हैं कि यू नो वीक में इतने घंटे लगा लो बैकलॉग के लिए। बट देन देर इज़ ऑल्सो दिस थिंग दैट like there is not enough time for students to study the theory throughout the week, because हफ्ते में 4 दिन 3-3 घंटे क्लासेस होती है। जो लोग उस एपेक्स प्रोग्राम में होते हैं विदाउट द स्कूल, द डमी स्कूलिंग वाला थिंग, देन it's even more. And after that you have to give, like, let's say some time to even revise what you're studying in class। उसके साथ साथ तुम्हें टेस्ट भी देना है, उसके साथ साथ बैकलॉग भी कवर करना है। सो हाउ डू यू थिंक मतलब प्रायोरिटाइज करना चाहिए? बिकॉज माई इंट्यूटिवली what I have told people is like, what I have told students is that कि आई फील लाइक यू शुड गिव टाइम टू, लाइक, थ्योरी जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको तो देना ही चाहिए, बट देन यू शुड ऑलवेज कीप अ मेट्रिक कि अगर मेरा एक टेस्ट है इस महीने, तो मैं उस टेस्ट के लिए पहले अच्छे से तैयारी करूँगा, बिकॉज उससे मुझे समझ आएगा कि मेरे को पहले वाला भी जो आता है उसको मैं कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहा हूँ। लाइक just reading theory, or if I'm putting more time into practicing questions and studying the lectures, then might not have that same मतलब मेरे को नहीं पता, मैं अपनी application test ही नहीं कर पा रहा अच्छे से। So I have suggested that you should actually prepare for the exam। अगर उसमें थोड़ा सा compromise हो भी रहा है, देन वो कवर हो जाएगा, बिकॉज इवेंचुअली एक बार तुम इस टॉपिक का भी टेस्ट तो दोगे, है ना? एंड दैट इज़ हाउ यू विल कवर द होल सिलेबस। सो for me, because I personally firsthand I've experienced that not giving tests actually affect a lot on your score। Like, I think easily ऐसे 1000-2000 ranks move हो जाती है if you're not good at giving tests, if you're not confident enough। तो what do you think, how you should prioritize that whole thing when you have time? मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 7-8 महीने हैं अभी जेई के लिए। how do you think उस चीज़ को उस टाइम करना चाहिए? And Prerak, you can take the question first, and then Rishabh can answer. Or Rishabh can take the question first if Prerak is having some issues with his mic. Uh, so, okay. So if someone wants to, someone has a backlog, and let's be very honest, even I did. To be very honest, I think my physics, entire 11th class physics was a backlog till almost the last month of my JEE advanced preparations. Okay. The, the thing that actually comes into play is I totally get it that you are not able to cover it, but I will also put in the point here that most of the time backlog is never there in the concepts, because see, you're attending classes, you're sometimes, at least when they're teaching you the stuff, you're giving some tests. So it's there in your memory. It's just that you've not practiced enough to be able to recall it or recall the nuances of some specific mechanism, let's say. Right. So what one strategy, good strategy would be exactly like you said, like do give some tests, and if let's say in those tests the section comes like mechanics comes, let's say, right now from mechanics, I've done 5 questions today, and these 5 topics were the ones that I could not answer. So I do not need to go through the entire mechanics book right now or like understand the entire concept from scratch. What I need to do is understand those 5 concepts properly. That's it. And if to understand those 5 concepts, I need some other concepts to be revised, I will definitely do that. But if I'm able to only, capture those 5 questions perfectly,
that's good enough to cover a backlog. Because slowly and steadily, as you keep doing that, your topic, kind of gets revised. And I think that's the best point that you can do if you do not have enough time. If you have enough time, then you can create, let's say, 1 hour a day. You can go through the topics that you missed out on, or like we have already said, create some cheat sheets. Cheat sheets will help you a lot in the long run. Like I have, like I would say, a huge stack of cheat sheets that I just threw out like 2 years ago. So cheat sheets will definitely help you out a lot. Create them on like free pages, staple them up, keep them where they're readily accessible. So for the test, you can just go through those cheat sheets. If you're not able to answer a question, then go back, understand why you were not able to answer the question, revise that particular topic, and be confident. Like I think the major point is we get scared that, oh my god, I have not practiced this concept for like a long time, or okay, I was not able to answer this question in this XYZ test. I will not be able to answer them in the future ones as well. It does not happen like that. A little bit of revision kind of goes a long way. Right, right. Prerak. लास्ट टाइम तो मैंने म्यूट भी नहीं किया था फिर भी ग्लिच हो गया। Hmm. कोई नहीं तो मतलब देखो, मैं तो ये मानता हूँ जब चीजें फ्रेशली स्टार्ट होती है ना, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन टेस्ट आई थिंक वी मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट। एंड मैं तो सोचता हूँ लाइफ के साथ भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है। हम प्रेजेंटली अगर अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो बैकलॉग बनने के चांसेस कम हो जाते हैं पहले तो। एंड मुझे लगता है प्रेजेंटली चीजें चलनी चाहिए। इट्स लाइक अगर आज लेक्चर मेरे जितने मैंने 2 या 3 लेक्चर देखे, तो मेरे आज के आज उनके रिविजन्स कंप्लीट होने चाहिए। एंड वंस जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है, देन वी शुड सी कि टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड टेस्ट आ रहा है तो इमिडिएटली हम टेस्ट की प्रिपरेशन वी शुड स्टार्ट। बट इफ अगर थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मोस्टली क्या रहता है ना, एक्स्ट्रा जो पढ़ने का रीडिंग और क्वेश्चंस लगाने का टाइम है, वो वीकेंड्स में आता है जिस दिन लेक्चर नहीं हो रहा होता है। तो वो टाइम हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर टेस्ट में थोड़ा टाइम रहेगा। इट्स लाइक मान लो कोई चैप्टर खत्म हुआ है, तो उसका टेस्ट नाउ वी हैव लाइक 1.5 2 हफ्ते बचे हैं। इस वीकेंड में जो आएगा ना, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स उनका हम लोग रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। एंड दिस मैनर वी शुड डू इट। ओके। एंड बीच बीच में बीमार भी पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि लेक्चर नहीं छूटना चाहिए। एटलीस्ट लेक्चर हम लोग जितने भी फोकस के साथ देख सकते हैं देख लेते हैं। उसका जो रिवीजन पार्ट है, अगर हम सेम डे नहीं कर पा रहे तो दैट वी कैन स्किप। बट एटलीस्ट कोचिंग जाके लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगर ऑनलाइन है तो मैं ऑनलाइन में भी बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करो लेक्चर देखने का। बिकॉज ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारे दिन में 5 या 6 घंटे के लेक्चर हैं, एंड फिर उसके बाद तुम 3 घंटे मान लो उनके रिवीजन में टाइम देते थे। तो अगर तुम बीमार पड़ गए एंड यू थिंक कि क्या कहते हैं पूरा ही कर हटा देते, तो इसका मतलब है यू विल नाउ हैव अ बैकलॉग ऑफ 8 और 9 आवर्स। बट अगर तुम एटलीस्ट लेक्चर देख लेते हो एंड उसको ट्राई करते हो समझने का, इट विल बी अ स्ट्रगल। 100% अपना नहीं दे पाओगे, बट स्टिल तुम स्ट्रगल करोगे। तो अब तुम्हारे पास रिवीजन के 3 घंटे का बैकलॉग बनेगा इंस्टेड ऑफ दैट 8 9 आवर्स। तो ट्राई करो, लेक्चर्स तुम देखते ही रहो हमेशा। एंड इन दिस मैनर यू कैन अवॉइड द बैकलॉग्स। एंड फिर जैसे ही तुम्हारा टेस्ट आने वाला होता है, सो बिफोर द टेस्ट आई थिंक जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके उसी टाइम पे हमें बुक्स रीड करनी चाहिए एंड क्वेश्चंस लगाने चाहिए। एकदम टेस्ट के लिए एंड में नहीं बच बैठना चाहिए। एंड जैसे टेस्ट आने वाला हो, जस्ट रिवाइज योर नोट्स, रीड योर बुक अगेन, बिकॉज तुम उसको पढ़ चुके हो, तो अब तुम्हें पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही साथ अब मॉड्यूल्स तुम सॉल्व कर चुके हो, तो व्हाट यू कैन डू, जो भी टेस्ट आने वाला है उससे रिलेटेड कोई तुम पेपर अरेंज कर सकते हो। लाइक जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, अगर जैसे मैं आकाश में पढ़ता था, तो जैसे मेरे को टेस्ट आ रहा है ना, तो सेम सिलेबस का मैं पिछले 1 2 साल का पेपर ले लेता था एंड वहां से मैं प्रैक्टिस कर लेता था।
तो ऑफलाइन सेंटर्स पे दैट कैन बी यूज्ड, पर ऑनलाइन में भी लास्ट ईयर की भी जो टेस्ट सीरीज रहती है कुछ रहती है सिमिलर रहती है, वहां से पेपर लेके यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट टेस्ट वेल। ओके, जस्ट मॉड्यूल्स में जो तुमने क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे उनको देखो, एंड जस्ट सी दोस टेस्ट, एंड इस तरह से बहुत तेज रिवीजन होता है आई थिंक, एंड ऑप्टिमम टाइम पे चलता है। तो इन दिस मैनर वी शुड डू द थिंग्स, एंड कुछ कुछ बनानी चाहिए हमें भी चीट शीट, जैसे ऋषभ ने बताया। वी शुड कीप सम, लाइक जो चीजें हम भूल जाते हैं उसके लिए हम लोग अलग से बना के रख सकते हैं चीजें। लाइक मेरे लिए क्या था, बायोलॉजी में ईयर्स और साइंटिस्ट के नेम थे, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस थी, एंड फिजिक्स में कुछ फॉर्मूलेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। जैसे कि स्पंदन, यू कैन रिमेम्बर दैट एक जनरल फॉर्मूला होता है ना कि दो बॉडीज टकराती हैं लीनियरली, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के साथ एक फॉर्मूला बनता है। हाँ, राइट अगर राइट। तुमको वो याद हो तो तुम इन इलास्टिक, इलास्टिक, सुपर इलास्टिक सब सॉल्व कर सकते हो। हम्म। तो वैसे फॉर्मूलेस के की शीट रख सकते हो सिर्फ। ऐसे फॉर्मूलेस मत रखना कि जैसे तुमने मतलब मॉड्यूल में 100 क्वेश्चन देखे और 3 क्वेश्चन एक फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे थे, तो ऐसे ही अगर तुम वो सारे रखोगे फॉर्मूले तो तुम बहुत बड़ा बना लोगे, एंड वो नेसेसरी नहीं रहेगा। इंस्टेड उनके डेरिवेशन देखो, एंड कोई ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे मैं बताया कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का कोलिजन वाला है, कोलिजन का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऑलमोस्ट उससे, तो वो फॉर्मूला केवल याद करके चल सकते हो। तो इनकी फॉर्मूला शीट्स और चीट शीट बना के रख सकते हो। रेस्ट जो तुम्हारा फुल नोट्स है उन्हीं को तुम यूज करो, एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर लोगे सर। राइट, मतलब या मतलब एग्जैक्टली वही बात है कि जो चीट शीट्स है वो भी बहुत ही स्मार्टली और हैंड पिक्ड होनी चाहिए। लाइक यू शुड जस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के तुम्हें ओवर उसको देख के ओवरवेलमिंग ना लगे। मतलब ऐसा भी होता था, लाइक आई मेड मिस्टेक्स व्हेन मेकिंग नोट्स, कि मैं नोट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाता था, तो मैं जब दोबारा ही पढ़ता था तो वो उतना ही लंबा था या वो उतना ही लगता था कि इसमें इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है। सो इट यूज टू बी सॉर्ट ऑफ ओवरवेलमिंग। तो I mean, it is better that when we not make that mistake and we make notes to only जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, right? And yeah, so I think you know I think we'll take another question, uh, and then we'll probably wind up if we don't have any other questions from people. So call me, Senpai. Do you want to actually come on the stage and ask the question? I mean, we can allow that if you want. Hello, you're not audible. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you now. But yeah, I just moved in class 11th right now, and I have a doubt regarding some topics. Like in my in my institution, they have started like in physics, they have started Sida kinematics. They didn't teach us like basic mathematics and vectors. So like it is very difficult to understand that the basic concepts of kinematics, and like the pressure is burning up, and I can't even understand in the like lectures from YouTube, because on the YouTube they like teach us from like vectors and then basic calculus differentiation, then they move into kinematics. But the teacher is like Sida, he did kinematics, so what can I do? Like I'm very facing very issues, like I can't understand that. Everything else is going fine, but Right, right. I mean, yeah, that is a very important concept. मतलब you should cover the basics, and अगर if you're not if that is not happening in your coaching, and if you're not being able to, if you're not able to manage that, then it will be hard to cover physics. Generally not even 11th but 12th, maybe those same concepts come. Even mathematics may you know the same concepts of integration differentiation come. So first thing I would suggest, जो ideally solution है, that is to go to your teacher in your coaching and ask him why he is doing so, and
if let's say he has a reason, then ask him to actually sit you down and explain, like weekends पे या whenever he finds time, right? Like there has to be some sort of a scheme where they teach you topics that you're not clear, or where you want to Yeah, actually yeah. learn something, right? So you should try to avail that. You should try to go and talk to him that I'm not able to understand, and I'm not able to solve questions. So can you teach me, or can you help me out with this topic? And then slowly, because you know कि course में क्या क्या है, so you can one by one take that to him and you can ask him. So that is one way to go about it. Second thing, like you said, you already tried YouTube, so I would say YouTube से you will get a good perspective of what is happening, right? मतलब ऐसा है कि if you watch a vector का video 1 घंटा 1.5 घंटा, and if you try to solve the questions and if you try to understand what is exactly happening, then you will get a hang of what vectors means, and how is it applied in general mathematics, general physics. So once you understand that, then you take it to a mentor, or a teacher. So then you take it to your coaching up teacher and you say that I've studied these things, and I want help with these things, so that way his burden is less and you have also studied something. Another thing is that you completely depend on, let's say, like a so I don't know in what situation are you talking, but then ideally in these sort of situations where you're not building a strong foundation, you should try to, if like I'm not saying have a tuition, but take help from a third teacher, right? Like a school coaching and then a third teacher, because personally I don't think that is important, but then because you need help right now, right? So the point is you have to, like I said, you have to be smart. So being smart also means that you have to understand uh, that some topics will be more important than the others. So if you are not clear with kinematics, you will have trouble going into mechanics. And if you have trouble going into mechanics, then that is probably like a very not a very healthy thing for your exam, because then mechanics is literally 30 to 25% of the whole paper. I think probably even more than that. So and it is not fair to lose on so much portion of the syllabus because of ki simply you couldn't cover a topic in coaching. So I would suggest ki you should ask your teacher, and even like make a group. Okay, so make a group of let's say 4 or 5 students, and you guys study together about vectors and everything, and then you discuss these topics, and then you take it to the teacher and say that we need help with these topics, you should give us 1 hour after the class. And I think that should work out. So try to work that out. The point is, I'm trying to emphasize is key, don't leave out on those topics, because without even units and dimensions, I mean, topics like those, even those, you end up leaving them, and you end up not covering them later on when you're in 12th, when you're just about to give your exams. So 11th may covering those topics will actually help you uh, you know go through a lot of stuff easily. So I would suggest that don't leave out of them. Rishabh, what is your advice on this? When you're not being clear with the basics, when the teachers are not supporting you in that sense. Right. Right. So I think it's pretty similar to what you said. I think there's one point you have to know that, like in your institution, wherever they're teaching you, right? So they're going to assume that you're going to know like a standard of like there's a standard for understanding of let's say kinematics before or vectors before they start off, and they're going to teach a large subset of students. But at the end of the day, it's not about the entire students that you have to care about. You have to care about your own understanding. The option where you can go and ask doubts is specifically for this particular reason, that maybe there are some students who do not understand some particular concepts, so that they can come and approach and not eat up time from other students. So I think that's the best way you can go ahead with it. Go ahead, ask the teacher that this is the kind of problem that you're facing. If possible, if they could spare you some time to help you understand those concepts. Or what if they're not able to at least give you some time, at least they can point you to the right resources, because as you said, YouTube is not working out. So at least they can tell you where to read up from, what books to refer, or maybe they can give you some of their own personal notes, right? Which can help you to kind of cover up
and then you can go ahead and ask them doubts and kind of understand the topic. I would say do this on a priority basis, because otherwise, like we said, the backlog will start creating up because you will not understand kinematics. And then by the time you're understanding kinematics, they will be on mechanics. So that will become a very vicious loop. So to avoid that, I think approaching the teacher would be the best way. Second way could be to, like, I'm assuming that institution means you're coaching. So the second way could be to go to your school teacher and ask them. Do not let them know about the context, but you can ask them about the basics, ask them to give you special time. And most of the time, the school teachers are usually pretty ready to at least help you understand the basics. Right. So I think school is a great place to build a foundation, especially because their focus is mostly on NCRT, right? And the advanced concepts can be built in your coaching. Though I would say a disclaimer here: do not leave out on your kinematics classes just because you're not understanding them. Rigorously, comprehensively take notes so that later on, when you're covering up the foundations as well, you can go back to your notes and then, at a very rapid pace, cover up whatever was taught. So I think that would be the best way you could, possibly attack this problem. Right. Uh, so, Prerak, I would like to ask a slight modification of this question only because that is also a very common question. Yeah, I Ki, do understand. Thanks a lot, Bia. yeah, so just stick with us. We're You're going to wind welcome. up. And yeah, so I think, Prerak, I'd like to ask a slight modification of that question only. That how to actually deal with coaching teachers, right? Or generally teachers who are not being very supportive, or who जो तुम्हें मतलब चीज़ें समझा तो रहे हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बट देन वो तुम्हें एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे तुम्हारे साथ, हाउ टू डील विद दोज सॉर्ट ऑफ टीचर्स। तो क्या तुम उस केस में यू गिव अप ऑन देम एंड तुम कहते हो कि मैं खुद पढ़ लूँगा, या तुम उनके पीछे पड़े रहते हो एंड you try to get things done from them? तो क्या अप्रोच होना चाहिए कोचिंग में विथ टीचर्स? Yeah, I think when teachers are not that supportive ना, मतलब ट्राई करना चाहिए कि देखो हर टीचर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है एंड परफेक्ट कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होता है। तो हमें सबसे पॉजिटिव लेना होता है, इवन कोई बेकार टीचर भी हो या फिर अच्छा सपोर्टिव टीचर नहीं हो, अब उसमें कोई ना कोई खासियत होती है, तभी वो इतने बड़े लेवल पे किसी को पढ़ा रहा है। तो वी शुड ट्राई टू टेक दैट फ्रॉम देम ओनली, एंड जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको आराम से इग्नोर कर सकते हैं, एंड जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको अपने आप में लेना चाहिए। लाइक यहाँ कई चीजें होती हैं जो मतलब बताते हैं टीचर्स, यू शुड टेक देम, एंड रेस्ट यू शुड नो व्हाट इज एक्चुअली बी गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर। एंड ज्यादातर टीचर ट्राई करते हैं कि यू गेट इनटू द टॉपर लिस्ट, मतलब टॉप करने में, एंड कब एंड वो तुम्हारा जस्ट सिलेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। सो इंस्टेड यू शुड सी व्हाट्स योर प्रिपरेशन एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग गुड विद यू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड डू। लाइक मेरे साथ क्या सीन था कि टीचर्स टोल्ड कि टॉपर्स में आना है तुमको, एंड उसके लिए फिर ऐसा था कि बायोलॉजी में बोलते थे सब पढ़ो, बट मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी। मैंने बोला मैं नहीं पढ़ रहा इधर उधर का, जितना होगा मैं ऐसे ही कर लूंगा, बिकॉज मोस्टली सिलेबस में यही आता है एग्जाम में। तो आई गॉट 350 आउट ऑफ 360, एंड इवन मैं 355 भी ले आता, एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का ही रॉन्ग कर दिया था एक्चुअली। So that actually helped me. So you need to think that what you can do, and what their advices can help you and what are not going to help you. ठीक, जो वो बताते हैं that's for a basic person, they don't modify it according to you. तुम्हें उन्हें अपने खुद से अडेप्ट होना पड़ता है उन एडवाइजेस के अकॉर्डिंग। Right. uh, Great advice. I think we've had enough topics covered, and we have been through a lot of different aspects of giving your exams. And I think the room is clear. We have answered pretty much all the questions that we had. Thank you so much, Rishabh and Prerak, for joining the session.
And thank you so much for the people that have joined or that will watch this this episode, or this sort of AMA ahead of, like, after it's posted. So we'll meet next week, and exams are coming up. I just like to say ki, be positive, be confident. Confidence is very important at this point. You should feel like you're already cracking through, and you should have that flow in you ki कल जाके या परसों जाके if you give the paper, you'll still do very well. Don't feel like you're not prepared. Don't feel like uh, you're not going to make it even if you give it uh, very well. But yeah, so mindset is important, and yeah, we'll see you next week. Thank you so much.